Hello children, this is 5th standard maths. Chapter name is Factors and Multiples. In that exercise 3.5. Now check divisibility by 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 and 15. Put right mark for divisible and cross mark for not divisible. In that first and second question over. Now third question. 66,660. That we have to check now. Okay, third question 66,660 number. Now we have to check whether it is divisible by 2. Divisible by 2 means in a even ones place there should be even number. Means 0, 2, 4, 6, 8. So it is a even number. Then we can say in a ones place 0, 2, 4, 6 even number should be there. So it will be that whole number will be divisible by 2. 66,660 है. रूल्स के प्रकार वंस प्लेस पे इवन नंबर चाहिए. यहाँ पे 0 है. 0 इज़ ए इवन नंबर, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2. नाउ सेकेंड 3 से डिवाइड करना है. whether now we have to check whether it is divisible by 3. According to the rule, sum divided by 3. We have to add 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 0. 6 plus 6 is 12. 12 plus 6 is 16, 17, 18. 18 plus 6 is 24. 24 plus 0 is 24 only. Now 24 divided by 3. Sum divided by 3. Okay. 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 0. Total. Write total of this and divided by 3. There is a rule. 3 how much are 24? 3 8s are 24. So we are getting 8. Without decimal point, directly we are getting 8. 3 का रूल के प्रकार 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 0 ये पूरा ऐड करना है, टोटल करना है. टोटल वैल्यू इज 24 and 24 divided by 3 करना है. So 3 1s are 3 8s are 24. It is perfectly dividing with 3. So it is divisible by, that whole number will be divisible by 3 ones are tables. Now fourth. Now we have to check this number will be divisible by 4. According to the rule, last 2 digits should be divided with 4. Last 2 means 60. Whether 60 by 4. 4 ones are 4. 2 carry. 4 5s are 20. 15 4s are 20. So 4 15s are, it is dividing. So we can say yes. Last 2 digit is, according to the rule, last 2 digit is divisible by 4. Then we can say that whole number is divided by 4 ones are tables. अभी 4 का चेक करना है इस नंबर पे. अकॉर्डिंग टू द रूल्स लास्ट 2 नंबर्स 4 से डिवाइड होता है नहीं, वो चेक करना है. सो इट इज़ डिवाइडिंग. 4 से डिवाइड हो रहा है. 60 डिवाइड बाई 4 मीन्स 15. डेसिमल नहीं आ रहा है, पॉइंट नहीं आ रहा है. डायरेक्टली वी आर गेटिंग नंबर्स, होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट. सो इट इज़ अ यस. मीन्स रिमाइंडर डिवाइड करने से हमको रिमाइंडर नहीं आ रहा है. Now according to phi rule, last digit should be 0 or 5. So here last digit is 0. So it is divisible by 5. We can say according to phi rule, last digit should be 0 or 5. N place पे 5 से पूरा नंबर डिवाइड होता है, परफेक्टली डिवाइड होता है नहीं. इसका रूल क्या है? रूल के प्रकार अब वंस प्लेस पे 0 और 5 रहे तो वो 5 वंस टेबल से डिवाइड होता है. सो वी कैन राइट S. Now 6. Whether this number is divisible by 6, rule is it should be divided with 2 or 3 co-prime number. So we already checked it is divided with 2 because in ones place 2 is there, in ones place 0 is there, even number. So it divided with 2. Then we have to check with 3. According to the rules, sum divided by 3. Sum divided by 3 means we are getting 8. So yes. So it is dividing with 2 and 3 also. Then we can say yes. even number है वंस प्लेस. सो इट्स 8 2 से डिवाइड होगा. आई 3 का रूल्स का प्रकार टोटल इज 24. 3 8s are 24. बोथ इज डिवाइडिंग विथ 2 and 3. Number is dividing both with 2 and 3. So we can say yes. Now we have to check whether this number is divided with 9. According to the rule, sum divided by 9 means total. We have to find the total. Total is totally 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 0 is 24. Total is 24. 9 how much are 24? 9 3s are 27. 9 2s are 18. We are getting decimal point.
9 2s 8, 9 3s 21, 9 3s 27. Okay, we are getting decimal point here, so no, we should not get decimal number. After dividing we have to get any whole number, so it is not dividing with 9. that whole number is not dividing with 9. अभी 9 से चेक करने के लिए रूल्स के प्रकार ये टोटल पूरा टोटल करके वो टोटल 24 है, वो 9 से चेक करना है. 9 हाउ मच दैट, 9 वन सा टेबल से चेक करना है. 9 वन सा टेबल से हम लोग डिवाइड करें तो हमको डेसिमल पॉइंट आता है. पॉइंट से हिसाब से नहीं आना है, होल नंबर्स आना है. सो वी कैन से नो. And 10 means in one's place 0 is there, mean that number will be divided with 10. 10 के हिसाब से one's place पे 0 रहे तो all number 10 से divide होता है. Now 12 rules. According to 12 rule, this should be divided with 3 and 4 both. We have to check whether this number divided with 3 and 4, then it will be divided with 12 ones tables. Now 3 means here 3 means yes, 6 plus 6 plus 6 plus 6, 0, total is 24. 24 divided by 3 means 3 8s are 24. It is dividing with 3, and we have to check with the 4. Now we have to check with the 4. 4 means last 2 digit, means 60 divided by 4. 4 15s are 60, so it is also dividing with 3 and 4, so we can say yes. And 15 rule, according to 15 rule, it should be divided with 3 and 5. We know that it is dividing with 3 because total is 24. 24 divided by 3 means it is dividing, and in one's place there should be 0 or 5. In one's place 0, so it will divide with 5 also, so we can say yes. Now next question is fourth question, 7,26,354. Now we have to check whether this number is divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 and 15. So okay, first one, whether it is divisible by 2. 2 means according to the rule even numbers in the ones place. There should be even number in ones place. So 4 is a even number, so it will be divisible by 2. The whole number 7,26,354 will be divisible by 2. अभी क्या है 7,26,354 2 से डिवाइड होता है नहीं, चेक करना है. इसके लिए रूल्स के प्रकार वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे इवन नंबर रहना चाहिए. सो नाउ हियर वंस प्लेस पे 4 है, 4 तो इवन नंबर है, तब ये होल नंबर 7,26,354 2 से डिवाइड हो सकता है. द नेक्स्ट इज 3. 3 rules means sum divided by 3. Sum means 7 plus 2 plus 7 plus 2 plus 6 plus 3 plus 5 plus 4. 7 plus 2 is 8, 9. 9 plus 6 is 15. 15 plus 3 is 18. 18 plus 4 means 22. 22 plus 5, 26. 27. So total is 27. 27 by 3. 27 by 3 means 3 9s are 27. It's in 3 ones are table, it is dividing. So this is also yes. That number 7,26,354 will divide with 3 ones are tables. Perfectly divide. this 7,26,354 को चेक करना है 3 से डिवाइड होता है नहीं. इसके लिए ईच नंबर्स ऐड करना है. ये पूरा ऐड करें तो टोटल 27 आएगा. 27 3 से डिवाइड हो सकता है. 3 9s are 27. सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 3. ये पूरा नंबर टोटली 7,26,354 3 से डिवाइड हो जाएगा. Now we have to check with the 4. 4 means last 2 digit. Last 2 digit means 54. वो 54 divided by 4. Okay, 54 divided by 4. Whether we are 4 ones are 4, 4 ones are 4, 1 carry. 4 3s are 12. 2 remainder, we are getting decimal number. Okay. 4 5 13.5. 13.5 is not a whole number, decimal number. We should not want decimal number. We want a perfect divisor, so it is not dividing with 4.
अभी क्या है 7,26,354, ये 4 से डिवाइड होता है, चेक करना है। इसके लिए पूरा नंबर डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट वंस एंड टेंस प्लेस का नंबर 4 से डिवाइड करें। 4 से डिवाइड तो हमको 13.5 आता है, डेसिमल नंबर आता है। डेसिमल नंबर नहीं चाहिए हमको होल नंबर्स चाहिए, मीन्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। इट मीन्स आफ्टर डिवाइडिंग रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन, रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, 0 से ज़्यादा नहीं आना, सो इट इज़ नॉट डिवाइडिंग। 5 के हिसाब से लास्ट नंबर पे वंस प्लेस है 5 और 0, should be 5 or 0. So here in ones place 4, so we can directly say this is not divisible by 5. Now with 6 we have to check both with 2 and 3. The numbers which divided with 2 and 3. According to two rules, in even place there should be, in ones place there should be even number. It's there, so it is dividing with 2. Then we have to check with the 3. In a 3 means the total is 27. 27 divided by 3 means 9. So it is dividing with 2 ones are tables and 3 ones are tables. 2 ones are means in ones place there should be even number, it is checked. And 3 ones also we already check in there. And it means total divided by 3. Total is 27. 3 ones are tables. It is dividing. So it is divided. The whole number is divided with 6 ones are tables. 6. अभी 7,26,354 को चेक करने के लिए 6 से चेक करना है, 2 से और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 का हिसाब से रूल्स प्रकार वंस प्लेस पे इवन नंबर रहना चाहिए, वो ऑलरेडी है, सो 2 इज चेक्ड। एंड 3 बोथ से भी रहना चाहिए। सो 3 से मीन्स सम डिवाइडेड बाई 3, सम मीन्स टोटल ऑफ दिस नंबर इज 27. 27 by 3 means it is dividing, so it is also yes. The next is 9. 9 means sum divided by 9. Total 7 plus 2 plus 6 plus 3 plus 5 plus 4 is 27. 27 by 9 means how much? 9 3s are. So it is dividing without decimal point. So 9 also it is dividing. 4 and 5 is not divided. And 10 means we want in ones place 0. If ones place 0 is there, then it will be divided. So it is not there, so no. Tens के लिए ones place पे 0 always 0 रहना चाहिए, 0 नहीं है, so we can directly say no. 5 and 10 is very easy. 5, 10 and 2 to check the divisibility. Now 12. So 12 means 3 and 4 we have to check. Divisible by 3 we already checked there. Total divided by 3. So by 3 it is dividing. And divisible by 4 means last 2 digit. Last 2 digit means 54. 54 divided by 4 means we are getting 13.5 something. 13.5. So it is not dividing with 4. It should be divided with both the number 3 and 4. It is dividing with 3 ones are tables but not with the 4 ones are tables. So no, it should be both. 12 के लिए 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए ये 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। 3 का हिसाब से टोटल डिवाइडेड बाई 3. Total is 27 by 3 means it is dividing, so we can yes. But in 4 means last 2 digit, that is 54. 54 3 ones 4 ones are table से डिवाइड नहीं होता है, डायरेक्टली डिवाइड ना होता है, सो रॉन्ग. सो ये 3 और 4 से भी डिवाइड होना ज़रूरी है, इसीलिए ये क्रॉस. देन 15 मीन्स इट शुड बी डिवाइड विथ 3 and 5. 3 and 5. 3 and 5 means 3 means it is dividing because total is 27. 27 divided by 3 means it is dividing with 3. And 5 means it should be in a even ones place there should be 0 or 5. But in ones place here 4. Ones place there should be 0 or 5. But in ones place here 4, so it is not dividing with 5. But it is dividing with 3 but not dividing with 5. So we want it should be divided with both the number. 15 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट 15 का चेक करने के लिए 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी भागाकार होना चाहिए. 3 का डिवाइड हो रहा है, वी ऑलरेडी चेक देयर. एंड 5 मीन्स इन वंस प्लेस देर शुड बी 5 और 0.
then only that number will be divided. 5 और 0 रहे तो ones place पे वो divide होगा. So it is not dividing with 5. So here we can say no. Now fifth question. Sorry, 54,795. 54,795, that we have to check whether it is divisible by 2, 3, 4, 5 and so on. So here I written the number. This is a question I written in each place for better understanding children. Now here we have to check with the 2. According to 2, in a ones place there should be even number. So it is not even number. So we can say no. 2 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वंस प्लेस पे इवन नंबर चाहिए, वो नहीं है, सो क्रॉस मार्क. एंड 3 का वी हैव टू चेक सम. 5 + 4 + 7 + 9 + 5 we have to check. Total should be divided with 3. 5 + 4 is 9. 9 + 7 is 16. 16 + 9 is 19. 25. 25 + 5 is 30. 30 divided by 3 means total divided by 3. 3 ones are 3 tens are. So yes, this is dividing with 3 ones are divided. So whole number is divided with 3. ये चेक करने लिए टोटल करना है. नंबर्स का टोटल करके 3 से डिवाइड करें. नंबर्स का टोटल तो 30 है. 33 से डिवाइड हो तो हमको 10 आ रहा है, होल नंबर आया. सो इट इज़ डिवाइडिंग. Then 4 we have to check. The rules is last 2 number we have to check. Last 2 number means 95. 95 divided by 4 we have to check. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 1 carry, 4 fours are 16.0 means we are getting decimal numbers. So no, it is not directly dividing, we are getting decimal number. We won't want decimal number, we want a whole number. अभी 4 से चेक करना है. 4 से चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करना है. सो हमको 24.2 आ रहा है, लेकिन डेसिमल पॉइंट आ रहा है. सो इट इज़ नॉट डिवाइडिंग विथ 4. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू चेक विद द 5. Next we have to check 54,795. That should be dividing, whether it is dividing with 5. 5 according to 5 rules, the in ones place there should be 5 or 0. So yes, this is dividing, that whole number is dividing with 5. 5 से चेक करना, डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए वंस प्लेस पे 5 और 0 रहना चाहिए. वंस प्लेस पे 0 और 5 रहना चाहिए. सो हियर वी हैव 5, सो इट मीन्स इट इज़ डिवाइडिंग विथ 5. Then 6 we have to check means it should be divided both with 2 ones and 3 ones. 2 ones and 3 ones means 2 already, 2 it is not dividing because in ones place there should be even number. 2 से चेक करना और 3 से चेक करना है. 2 से नहीं डिवाइड नहीं होता है, रीज़न है इवन नंबर नहीं है. सो वी कैन डायरेक्टली से नो, इट शुड बी डिवाइड बोथ विथ 2 and 3 ones are tables. ये 2 से भी 3 से भी बोथ से दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए. अभी क्या है, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड होता है, लेकिन हमको दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए. सो नो. एंड 9 रूल इज सम डिवाइडेड बाय 9. सम मीन्स टोटल इज 5 + 4 + 7 + 9 + 5 is 30. 30 divided by 9. 30 divided by 9 means 9 how much are 9 3s are 27, 3, then we get point, decimal point. We don't want decimal point, so no. 9 से नहीं होता है, 9 ones are tables से 30 नहीं आता, परफेक्ट डिवाइजर नहीं है. देन टेंस का देखा ना, टेंस का लिए इन वंस प्लेस देर शुड बी 0 in ones place. Okay, so no. 10 also no, only 0 in ones place. 12 का चेक करना है. 12 का चेक करना है, 3 और 4 दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए. 3 and 4. So we already checked with the 3. 30 total divided by 3. 30 divided by 3 means it is dividing with 3. Then whether we have to, we already checked with 4 also. In 4 it is not dividing. Last 2 digit 95 divided by 4 means we are getting decimal number. So it should be divided with the both the numbers. So we can say no.
अभी 15 से ट्राई करना है. 15 का it should be divided with 3 and 5 ones are tables. 3 means total divided by 3. Total is 30. 30 divided by 3 we already checked, it is dividing. Okay, total divided by 3 ones are tables से divide हो रहा है. And we have to check with the 5. 5 means it is dividing because ones place 5 है 0 रहना चाहिए. Okay, it is dividing with 3. Total divided by 3 means 30 divided by 3 means it is dividing with 3 ones are tables, and 5 ones are also it is dividing because in ones place 5 is there. So it is dividing both with the 3 and 5 means should be divided. That number is exactly divided by 15.